ये मुश्किल भी था और उतना ही आसान भी था, क्योंकि जब आप बहुत मुश्किल काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। इतने सालों की जितनी मेहनत थी मैंने इस फिल्म में लगा दी। सब कुछ सुनने का मन, आई थिंक वो क्षमता लोग खो देते हैं आफ्टर बीइंग एक्सपीरियंस्ड और सीनियर होने के बाद, वो इन्होंने नहीं खोई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। So he was like, if I'm doing action, I'm coming to Bollywood. Yeah. We all know this Maidan is illegal. ये एक आसान प्रोजेक्ट नहीं है। क्रैक इज अ वेरी एम्बिशियस, वेरी पैशनेट प्रोजेक्ट। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में ये फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो खुल जाना, एक कैमरा के सामने जब आदमी एकदम खुल जाता है ना, तो ये वो विद्युत आपको देखने को मिलेगा। and that is what he's also become. आप जानना चाहते थे, बता दिया। तो वैसे भी रात को फोन करके पूछूंगा और सवाल है मेरे पास। तेरी चैलेंजर रेस में मैं तेरे को चैलेंज करता है, हिम्मत तो आजा। Hi, I'm Ashu and you're watching me on FilmiBeat. Today I'm sitting with a bunch of cracks who are all set for the biggest action entertainer of the year. Join me in welcoming Vidyut Jamwal, Amy Jackson, Arjun Rampal and Captain of Ship Aditya Dutt. Welcome you all. Firstly, welcome to Delhi. दिलवालों के शहर में आपका स्वागत है और I know आप लोग थके हुए हैं सुबह से इंटरव्यू करके. And I'll start with Aditya only. How difficult or easy it was to इन सबको एक साथ लाना इस फिल्म के लिए? Every film has a process of getting them together, and honestly it was in a way, after I had the script in mind, it was actually, they made it easy for me to bring them on board. When I went and narrated the script to say Vidyut for the first time, gave him the idea, which he was already on board. Arjun made it very comfortable when I met him, and he like I thought I thought I'm just going to have some coffee with him, hi, hello, tell him an idea and narrate the script later, but he said, तो आया अभी पूरी script ही सुना दे. And then I said okay and narrated the script, and he kind of said that I'm doing it right there and there. Amy, I think so, had a similar experience. She obviously, we kind of narrated over the phone. She was in London jogging, if I remember. I was like, oh, got a Zoom? Really? Yeah, and I didn't realize we'd do the narration. So we got a vibe. And so she was jogging, and then she sat at a park, and I guess I was narrating the whole script to her in that. And same for Nora. Nora was on her way to Ooty, and I was doing a Zoom call with her narrating a script. So honestly, it just fell into place. Everything just fell into place. Arjun, my question to you: you're yourself a fitness icon. मतलब हम देखते आए हैं, आप खुद हैं, लेकिन when you are working with somebody like Vidyut, who's the quintessential action hero of Bollywood, तो कितना difficult था इनके साथ काम करने का? कुछ सीखा आपने विद्युत से? Of course, सीखने को तो मिलता ही, जब आप एक कलाकार के साथ काम कर रहे हैं जिनकी सोच, जिनकी नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस, जितना उन्होंने एक ह्यूमन एनाटमी को समझने में डाल दिया है, बहुत कम लोग होते हैं वैसे जिनको इतनी जानकारी होती है। विद्युत एक ऐसे शख्स हैं, इंसान हैं, जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी भर, और जो उनकी समझ है, सोच है, वो एक बहुत प्रैक्टिकल वे में वो समझाते हैं। इट्स नॉट, उन्होंने खुद अपने पे टेस्ट किया है जो भी वो बातें करते हैं उसके बारे में। सो इट्स ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड दैट ही एक्सप्लेन्स टू यू। तो बहुत कुछ वैसे सीखने को मिला। ऑफ कोर्स जब आप ऐसे एथलीट के साथ काम कर रहे हो तो आपको एक मौका मिलता है टू अप योर गेम, टू ब्रिंग अ बेटर गेम टू द टेबल, और उम्मीद है कि मैंने वो किया है इस फिल्म के दौरान। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला आपसे बहुत कुछ सीखा है विद्युत, तो एज अ सीनियर, क्योंकि मैंने कहा ही हिमसेल्फ इज अ फिटनेस आइकन, और आपको देख के लगता नहीं कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अर्जुन से क्या लगा कुछ इस फिल्म को करने के बाद? हर आदमी को हर कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, हर आदमी में बहुत कुछ जानने की एक जिज्ञासा भी होती है। अर्जुन से बहुत चीज़ें सीखी हैं, जिसके बारे में बात इस समय करना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की एनर्जी सेट पे लेके आते हैं, जैसे आप बोल रही हैं सीनियर है, हमें कभी फील नहीं होता कि सीनियर है, ये हमें लगता है कि हमारे तरह ही है या हम थोड़े यंग ही होंगे, जिस तरह के इनमें उत्तेजित रहते हैं काम करने के लिए। सो आई थिंक वो सीखने के लिए है कि यू कुड बी
इन द इंडस्ट्री फॉर 20 साल भी हो सकते हैं आपके हुए, मगर जब आप आते हैं तो आपको सब कुछ जानना है, सब कुछ करना है, सब कुछ सुनने का मन है। आई थिंक वो क्षमता लोग खो देते हैं आफ्टर बीइंग एक्सपीरियंस्ड और सीनियर होने के बाद, वो इन्होंने नहीं खोई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी बात। Yeah. Like I said that, you know, you're the quintessential action hero for me, and Commando हो या आपकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, खुदा हाफिज, अपने आप को बहुत एक्सट्रीम में आप पुश करते हैं, तो इसमें क्या हम देखें, like will it be safe to say that this is your toughest film? नहीं, मेरे लिए सबसे आसान थी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम करने में मुझे मजे आते हैं और इसमें सबसे मुश्किल काम किए हैं, तो मुझे बहुत आनंद आया। हर दिन जब मैं सेट पे आता था या शूटिंग पे जाता था, मुझे लगता था कि आज तो कमाल होने वाला, आज तो कमाल होने वाला है, और कमाल होता था। सो ये मुश्किल भी था और उतना ही आसान भी था, क्योंकि जब आप बहुत मुश्किल काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। इतने सालों की जितनी मेहनत थी मैंने इस फिल्म में लगा दी। अर्जुन ने कहा इस फिल्म में कुछ भी नकली नहीं है, सब कुछ असली हुआ है, तो कितनी चोटें लगी आप लोगों को? बहुत गिरे पड़े होंगे, क्योंकि एक्शंस आर लाइक क्लास। हर इंसान को चोट तो लगती है कि एक्शन फिल्म लड़कियों ने भी खुद से एक्शन किया, लाइक बोथ द गर्ल्स। सबने एक्शन किया, और जब आप एक्शन फिल्म करते हैं तो ये एक होता ही है कि आपको चोटें लगती है, मगर ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आप एक्शन फिल्म में चोट लगने के बाद आप पूरा एक्शन खत्म कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने भी एक्शन किया हमारी फिल्म में, चाहे वो चोट लगी हो, काफ़ी गंभीर चोटें थी। अर्जुन की डिस्क हर्निएशन हो गई थी, और डिस्क हर्निएशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, मगर 2 हफ्ते के बाद ये वापस आए और ऐसा फील भी नहीं होने दिया हमें कि चोट लगी है। बट ये नॉर्मल काम है, ये हर आदमी को करना पड़ता है अगर वो एक्शन फिल्म में, और हम लोगों ने किया है। Amy, firstly, congratulations. The year started for you on a joyous note. You got engaged, but you took 8 years to make a comeback in Bollywood. Almost 8 years after you're coming to Bollywood. So what made you? 8 years? Yeah. No way. Really? A Bollywood film. You Wow. were active Oh my in God, down that south, feels so but old. yeah. After 8 years, I think you're making a comeback with Crackk. She's a newcomer, God, dude. oh my God, this isn't even a Newcomer. comeback. Why This you is like took a so whole long? rebirth. Why you took so long to say yes to a Bollywood film? You know, it was, well, I think the last film was 2.0. I had my break, and then I had my little boy, obviously, and then COVID happened. Then I've been working in the UK, finished a film with Guy Ritchie, and just started a series, and that was great because it was on my home turf, and I had my little boy, so I was going back and forth, and it was easy at that extent. But then I heard about Crackk, and I've always wanted to do an action genre. I've always wanted to work with Vidyut as well. I remember when I was here, and I was like, if I'm going to do an action film, it's going to be with Vidyut Jamwal. So I think that opportunity came, and it worked at the right time. My little boy's just started school as well, so now I'm like, right, well, let's get back to work. I read somewhere that it was great to get that opportunity, and it was honestly divine timing. Okay. It really was. Okay, so I read somewhere that you took your son to sets also for some. That was for my South film, for Mission. Okay. So we took him. That was another action film that just released last month. But yeah, he loved it. He saw all the fight choreography. He thought that the stunt master, Silver Master, was training the Hulk and Spider-Man. So he wanted to get involved, and he thought it was great. I was beating up all these bad guys, and he was like, "Oh my God, Mummy!" So he thinks it was great. So but you can't do this in the playground. And your fiance also, you said that he's a huge Bollywood fan and he wants to be a Bollywood. What he loves in Bollywood? Well, he didn't know too much about it beforehand, but now he's been introduced. He met Aditya. He came to the edit. He saw it and got a feel for the whole place, and then saw the trailer, and he nearly fell off his chair. So he was like, "If I'm doing action, I'm coming to Bollywood." Okay, so this question is for everyone besides Vidyut, क्योंकि Vidyut इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो एज एन एक्टर तो आप लोगों की कैमराडरी हम सबने देखी, आपने भी बताया, तो एज अ प्रोड्यूसर कैसे थे सेट पर? Vijay. Oh, sorry, you're asking me. Oh, God. How? No. I zoned completely. How out was then. he I'm so as a sorry. producer? How was he as a producer? Fantastic, because I didn't even realize he was the producer on set, because he was so chilled, so cool, calm and collected. Obviously, I knew he was producing the film, but there was none of that kind of, you know, I feel a producer has a kind of businessman outlook, and he's very creative. He's very personal, very approachable, and also we're doing scenes left, right, and center. So I think his time was taken up with that. I don't know what that was happening, you know, on the behind the scenes, but on set he was a fully fledged actor. So that's all I can comment on. Arjun sir. I think what's a good producer
यू नो एक है कि एक विजन होती है डायरेक्टर की जिन्होंने कहानी लिखी, ओके आप खुद उस विजन के साथ जुड़ गए हैं और फिर यू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स एंड यू गिव एवरीथिंग। ये जो प्रोजेक्ट है और मैं ये रियली आई वांट टू अंडरलाइन दिस, ये एक आसान प्रोजेक्ट नहीं है। क्रैक इज़ अ वेरी एम्बिशियस, वेरी पैशनेट प्रोजेक्ट। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में ये फिल्म नहीं बना पाएंगे। यू नो इट्स गॉट दैट काइंड ऑफ एक्शन सेट पीसेस, इट्स गॉट वो एक ऑनेस्टी है, एक सोच है, एक कला है जो विच रिक्वायर्ड an energy, effort by a producer, you know, who'll understand this. Vidyut, fortunately, is the producer of this film. Fortunately, you know, if Vidyut की ये कहानी होती and Vidyut was the actor और कोई दूसरा producer होता इस film पे, okay, most probably ये film उस तरीके से नहीं बनती. You know, so Vidyut has been that producer who's given complete justice to Aditya. To get his creativity out, to me as an actor, to get whatever I wanted out. You know, he's listened, he has looked after every person. जब हम action भी कर रहे थे, he would come and he would say, चल यार, what do you think our fight should be like? You know what I mean? Yeah. Even though he has so much knowledge about it, what is the punch you like to throw the best? What is it that you like to do which would really, really make something good happen? Let's work around that. Okay? जब भी कहीं भी कोई भी रुकावट आती थी या कोई hurdles आते थे, obstacles आते थे हमारे shooting के दौरान, हो जाता है. You know, कभी कभी बारिश हो गई. Aditya is also running on a tight schedule. You know, you can't take all the shots. पूरे the whole set is in panic. Vidyut is sitting calmly. तो बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रॉम विद्युत एज अ प्रोड्यूसर. ही सेड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और उन्होंने इस विजन में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. एंड दैट इज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर टू हैव. दैट इज अ रियल प्रोड्यूसर. यू नो कि जो प्रॉमिस किया था आदित्य को, मुझे, एमी को, नोरा को, अपने फैंस को, अपने एक्शन टीम को, उन्होंने कहीं भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. सो दैट्स द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर ही इज बीन ऑन दिस एंड आई होप दैट दिस फिल्म डज रियली वेल, दैट उनको आगे भी जाके मौका मिले टू मेक फिल्म्स लाइक दैट. बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही है ट्रेलर में, हमको लग रहा है. और लेकिन फिर से मेरा सवाल वही रहेगा क्योंकि प्रोड्यूसर है तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपके लिए इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बॉक्स ऑफिस को कैसे देखते हैं आप? और इस समय जो फ्लेवर ऑफ द सीजन में बोलूँगी मसाला फिल्मों का है. पिछली जो भी फिल्में हिट हुई हैं तो कहीं ना कहीं श्योर भी हैं इस फिल्म को लेके, कहीं लग रहा है कि उन्होंने क्योंकि फ्लेवर ऑफ ऑडियंस इस समय मसाला एक बना हुआ है तो इस फिल्म को लेके कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली चलेगी. नहीं, मैं दरअसल जब मैं काम करता हूँ तो मैं अपनी किस्मत पे तो यकीन करता हूँ. मेरे साथ वाले जो होते हैं ना, मैं उनकी किस्मत पे बहुत यकीन करता हूँ. मुझे लगता है ये सब इस बार वो किस्मत लेके आए हैं कि चमत्कार होने की चांसेस हैं. बिल्कुल. अभी बॉलीवुड के लिए ये साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. रिसेंटली वी इंटरव्यूड अ ट्रेड एनालिस्ट और उनको काफी भरोसा है. वो कह रहे हैं क्रैक कैन बी द गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड दिस ईयर क्योंकि एज ऑफ नाउ जितनी फिल्में आई, उनके मुंह में घी शक्कर, मैं चाहता हूँ कि उनकी हर बात सच हो जाए. आदित्य से मेरा सवाल है, आप कमांडो में भी इनके साथ काम कर चुके हैं एंड नाउ क्रैक द बिगेस्ट एक्शन फिल्म. कितना डिफरेंस आया है विद्युत में एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर? मैं भी जानना चाहूँ. बहुत जरूरी बात है. A lot. Like I said कि the film इससे पहले जो उन्होंने पिक्चरें की है, कमांडो, आईबी, खुदा हाफिज, ये सारी पिक्चरें were of characters which were they were all inner characters which were like in terms of you should speak less, fewer dialogues, not too expressive because you're a commando, you're a trainee, you're IB के अंदर he's again a raw officer. So the difference from that was 2019 when we did Commando 3, and by the time we started shooting for Crackk, where there's a character who's a full tapori, out there, expressive about what he feels, unpredictable, completely crazy. So the whole process of him, he's understood how to let go of his guards in front of the camera, which is the biggest key or secret that he's found for himself.
तो अभी अगर if I guess he's just let go. अभी तो Is खुल what- जाना, अब खुल जाता है। एक कैमरा के अगर सामने एक- जब आदमी एकदम खुल जाता जाता है ना, तो ये that वो is- विद्युत आपको देखने को मिलेगा मिलेगा इस and track that is में। what he's also become also is As a person. as a person in front of the camera, which is the most the best thing for an actor to achieve that. आप जानना चाहते थे, बता दिया। मैं तो वैसे भी रात को फोन करके पूछूंगा और सवाल है मेरे पास। ये फिल्म का टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। सो इस लाइन की क्या अहमियत है रियल लाइफ में आप सबके लिए? The whole point is that you want to win in life, or that for me it is ke there will be failures in life, Yeah. but you have to keep on going and going till the time you don't win. You don't see that, so there is nothing known as a permanent failure for sure. So keep on going till the time you don't get it. You'll fail, get up again, try again, fail, and then you will win one day. So मुझे तो लगता है कि मैं रोज जी रहा हूँ, ओके, और जब आंखें खुलती हैं खुशी होती है कि एक और दिन मिल गया है, उसको किस तरीके से आप जीने वाले हो उसी में आपकी जीत है। the tagline of your Yes, film. I think touching on what Aditya said, I think it's overcoming failures in that kind of way. And we talked about it earlier about, you got to keep going on in life as well and reaching the next level and improving and growing and evolving. So I don't think there's a stage of, I've won, this is it. And then you sit back and, let it all happen. You've got to keep going. You've got to keep progressing, keep changing. विद्युत, नहीं, लाइफ का तो मुझे पक्का नहीं है कि इसका क्या मायने है, बट इस फिल्म में क्योंकि ये गेम पे डिपेंडेंट है और हमारी जो कंपटीशन भी है, जो जीतेगा वही जिएगा, क्योंकि वो मर जाएगा नहीं, तो इतने खतरनाक गेम है। बट इन लाइफ मुझे लगता है कि द डिज़ायर टू विक्ट्री गेट्स यू सैड। जीतने की इतनी चाह नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ करने की होनी चाहिए। जीत तो आपके हाथ में है ही नहीं, अगर आप सबसे बेस्ट काम करेंगे तो जीत हो जाएगी। सो लाइफ एंड द गेम इज डिफरेंट। 23rd Feb, Crackk is coming. Go watch it at a theatre near you.